पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत है। यार अंग्रेजों को वाघा बॉर्डर पर भारतीय साइड पे इंडियन तिरंगे के साथ देख पाकिस्तानियों के पिछवाड़ों से निकले हुए हैं। अच्छा अंग्रेज आए हैं उधर? नहीं यार। और साथ इंडियन तिरंगा भी ले गया है, बड़ा सा टाइटल में है, लेकिन भाई साहब पाकिस्तानियों को तो वाकई में भाई साहब दर्द उठे। यही बात तो तुम्हारी बिल्कुल कसम से ऐसी चीज ये लोग देखते हैं ना तो कसम से उनका खून खोलता है। वॉच करते देखते हैं क्या सीन है तो कौन हम करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। हाँ वो बैठे हुए नहीं भैया। हाँ वो साथ हाँ इनके टंगे भी लगाए हुए हैं मुंह पे। जबरदस्त हो यार। ये क्या माहौल बनाया और ये वाघा बॉर्डर भी है। We're in a town called Amritsar in northern India in the state of Punjab. We are so excited to be here, and something that it's really known for is there is a border between India and Pakistan that we're 40 kilometers from that has a big ceremony that हमारी साइड में नहीं आते। So we're gonna do that. We're Keith and Dan, and if you're new here, we're 2 Canadians trying to experience as much of the world as we can. Currently, we're in India and have been loving it. In today's video, we are going to be experiencing the Atari Wagah border ceremony, a ceremony between India and Pakistan that has been taking place daily since 1959. This ceremony showcases both the rivalry and cooperation of the countries through a colorful display of drills, and apparently is an experience you don't want to miss. Subscribe to follow along. We gotta grab a 40 Yeah, 40 kilometers, so who knows how long it is. Yeah, maybe an hour. We did it, we got ourselves a tuk-tuk. It's gonna be 800 for the round trip, and we're splitting it 3 ways. This is Nick, by the way. ये देखो 3 दिन है भाई साहब। कहाँ पर जा रहे हैं आप? 3 तरह पे। यार वाघा बॉर्डर हमने कहीं याद है। यार मैं कहता हूँ वीडियो निकाल बहुत है। हम लोग को तो प्रूव हो जाता है कि बाप हमारा कौन है। इंडियन तिरंगा। और ये भाई साहब कितने खुशी से लगा। Okay, I didn't capture that wildness, but that was hectic coming out of the tuk-tuk. We got these things on our faces, and of course the guy really wanted money. He's very direct about it. Give me money, give me money. But not until after. But it's not until afterwards. Obviously, so you give him a little bit because you got a service, but you didn't discuss it, so it's not really a... Anyhow. She was coming. You can get a lift if you want, but we're gonna walk. Right, so a bit of history if you don't know. The partition was an event that happened in 1947, and it was quite dark for both Pakistan and India. Essentially, it was the world's biggest mass migration. 18 million people moved across the borders after independence was declared in Pakistan and in India. So really chaotic and some really tragic, horrific things happened. And this is sort of why there's quite a bit of tension between India and Pakistan. And that tension is something we're going to see today. This is pretty crazy. A lot of people lined up here. I don't know what to expect. This is my first time here. Devin's actually been here before. But do you have any idea what to expect? High chaos, like everything else. A big fun function, I hope. This is they're selling popcorn and food. This seems fun. Step 1 was getting placed in, I think, the online booking /order line, and I think now there's a security check. I think we're making our way in. For being here before, I don't remember any of this. Obviously, I had to do this before. I just remember how fun it was once we were in. Give me pictures. We get Back in the day. Probably. Flashback. Right now, we're at the Indian-Pakistani border. Where are we? We're basically in Pakistan, about 20 meters away. Like a Colosseum thing going on here. And if you look over there, you can't really see because of the sun, but literally there's the exact same thing with a wall or gate in the middle and then Pakistan on the other side. It's like a football match. हमारा भी दिन करा दो साइड वाली जाएगी करना। I wish I knew what they were saying. ये देखो रश। Okay, so we made it through security. We do still have our little bags with us. Yeah, because he had a power bank with him, so you can't bring power banks. I think he'll drop it off. There's some storage areas. Or maybe hide it in the bush.
And then hopefully come back because we don't have service here anymore because we're literally at the border. Yeah, it's 4 o'clock. I think the ceremony starts in an hour. 5:15, so we have a bit of The time. seats fill up. I don't know if there's actually given seats. No, there's So it's a bit of a free-for-all, an Indian free-for-all. This is really cool though. This it's is really like sweet. bringing me back. At first I was like quiet because I was a little like, oh my gosh, are we gonna lose all of our bags? What's gonna happen? But we're in. Everyone's been good. nice and helpful. Yeah, so this little bag was allowed in. I was searched, the got bag was nothing searched. in it. But yeah, power bags and obviously weapons, lighters, cigarettes, things like that that could be suspicious, Not or questionable, allowed. and not allowed. There's also a lot of हमारे तो security कोई and it ऐसा आ seems गया like कि a very safe place. ऐसे Which ये is करके cool. आ गया घर तक छोड़ गया So Good. you can actually go and put your stuff in a locker right over there. Okay, that's sweet. It's a legit looking Does it place. cost money? नहीं वो ये देखो भैया Oh my goodness, we're approaching it. We can see both flags, India and then Pakistan's right on there. the other side. This is again, so I have been here before, but this was, I remember, the coolest feeling, and I've got that again. We're so close to two different countries, and It's right a now, big celebration, big party. It's a big celebration, which is kind of cool. And there's so many people, so many Indian tourists here with us, and it's just so exciting. We're part of it. This is so fun. यार देखो ना वो देख इंडियन फ्लैग सारे बच्चों को भी हाथ में दियो सारे वो लोग भाई कितना बड़ा है वो बिल्डिंग देखो आगे So this event, by the way, it's called this is called the Border Retreat Ceremony. And this happens every day and it's free. We booked online, by the way. वो देखो आधा पाकिस्तान नजर आता है देख लो बिल्डिंग देख लो ये जो हमने चीज नहीं देखी थी ऊपर वाली बिल्डिंग ये वही है ऊपर भी जगह है उसके नीचे भी जगह You है won't be able to hear much because the speaker's behind us. फुल स्टेडियम वाला माहौल This is what it is. It's wild. All of the Indian side is full. Pakistan right now only has a few people. At the time, we didn't realize, but it was the start of Ramadan, so the Pakistan side actually stayed fairly empty, but usually both sides are full, like the first time I went. हाँ रमजान में फिर नहीं आता People were running flags in the middle of the square, I guess you could call it. People were clapping. It's a whole energy here. Celebrating India. ये देख लो बाहर कैमरा जो है लोगों के ये जगह उनकी वजह से रोक भी देते इतनी हाई होती है मेरी भाई इंडिया का ये क्या हुआ ये तो जगह परेड कर दी वहाँ पे लोग जा रहे हैं It's all the girls down there. I want to go join them, but I don't know how to get down. I'm gonna dance up here. ये देखो भाई ये अंग्रेज भाई ये एक बात करूँ सारा होने को Just dancing now. Some snacks. लीड दिखा रहे हैं This upper part of the stadium is now filling up, which is wild. This big stadium is just like full, probably every day. देखो ना भाई लोग आई जा रहा हमारी साइड पे इतना रश नहीं होता Now we don't have space. अगर हो Now, shoulder to shoulder. बहुत रश अब फुल हो गई फुल होगा बिल्कुल कोई जगह नहीं है ऐसी एक भी बैठने की कोई सीट नहीं है फुल ये साइड ब्रेक शुरू आज और बहुत फ्रेंडली होती है Honestly, I like his job. I want to be that kind of security army guy. ये देखो इंडिया की सपोर्ट के लिए मुस्लिम पूरा हम यार बोलो क्यों नहीं यार मैं तो पाकिस्तानी को दिखाना चाह रहा हूँ पता चले ना ये बफर से ओए उधर स्क्रीन लगी हुई थी बिल्कुल 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 लगी स्क्रीन पे भी दिखाते हैं सामने हमारे पास नहीं है ये। मतलब कि वहाँ पे फुल बड़ी स्क्रीन पे
फुल भाई लाइव चल रहा है। बड़े खुश बस पाकिस्तान को तो ये पता है टांग हमारी। We're a bit far, but there's one guy that's charging the sword. This other guy is running fast. We're just cheering non-stop. देखो ना भाई खुशियाँ। They have some very good high कभी kicks. से घंटा पर नहीं पड़ा कि आगे ये पाकिस्तानी होते तो उनको देखते ही रहते हैं। And the one officer in the middle that also is sort of the entertainer is telling us when to cheer. इन्होंने ये चीजें कभी नहीं देखी ना भैया। हाथ मिलाया है अभी आगे वीडियो उधर चला गया है किधर? हाँ एक उधर है इधर हुई वीडियो खत्म। यार अंदाजा लगाओ भाई साहब कितना वो एंजॉय कर रहे थे, वो भी इंडियन साइड। यार वजह दोनों ने इंडियन फ्लैग मुंह पे लगा के कितनी खुशी से आ रहे वही ना भाई, तीनों ने रक्षों पे बैठे, रक्षों पे इंडियन तिरंगा यहाँ पे लगाया, सीधा पहुंचे वहां पर। वजह कितना बड़ा क्राउड था यार। मैं तो यार मैं 40,000 बात करूंगा सिर्फ इधर बॉर्डर भी पता लग जाता है बाप कौन और बेटा कौन है। सीधी सीधी बात करूंगा, क्यों हमारी साइड में ना कोई बिल्डिंग है ना कुछ है। इंडियन साइड पे चढ़ जाओ तुम्हें वहां से आधा पाकिस्तान नजर आ रहा है। बिल्कुल हम गए थे ना यार, उधर बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। मैं वो दीवार के कोने पे बैठा था। बिल्कुल ऐसे ही हमारे यहाँ तो जगह नहीं मिलती बैठने की, क्योंकि वहाँ पे कोई बैठने का उधर इंतजाम एक पूरा पाकिस्तान नजर आता है। अबे 4 मंजिलें 4। भाई उन्होंने ऐसा सिस्टम किया हुआ, अगर हम लोग अपनी साइड पे बैठे हमें इंडिया की उस बिल्डिंग के अलावा कुछ पीछे का नजर ही नहीं आता। अबे मैंने यहाँ पर देखा अगर इंडियन वहां पर बैठे तो आधा पाकिस्तान वहां से उनको बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई हुई है, बहुत बिल्डिंग, पूरा ग्राउंड है। ग्राउंड लगता है कि 30 से 40 हजार बंदा यहाँ पर बैठ सकता है, जितनी बड़ी ये जगह है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। यार कितना एंजॉय होता है इंडियन साइड पे, इसमें तो बाद में कोई शक नहीं। हम लोग जब गए थे पाकिस्तान वाली साइड पे थे हम, तो इंडियन साइड पे क्या शोर होता था, क्या गाने बजते थे। और आज ये तो पहली दफा देखा है वहां पे स्क्रीन लगी हुई है भाई सामने यार, वो चीज लाइव देखा रहे हैं। ये मतलब किसी को अगर दूर से सही नजर नहीं आता वो तो स्क्रीन पे देख ले, सामने बड़ी स्क्रीन लगी है उसमें देखो। ये चीज है, ये हमारे साइड पे नहीं है भैया। हमारे साथ हमारे पे बैठने के लिए कुर्सियां नहीं रखी हुई थी। वही ना। और हमारे कहते हैं हमारी वाघा बॉर्डर पर टांग ज्यादा इंडिया से उठती है। देखो तुम टांगे लंबी उठाते रहो, उधर भाई इंडिया ने बिल्डिंग इतनी बड़ी बनाई है कि वहां से तुम्हारा पूरा आधा पाकिस्तान नजर आ रहा है। आज तो हम टांगे ऊपर कर करके हमारा बेड़ा गर्क हो गया। टांग ऊपर कर करके हमारी एक टांग पहले ऊपर होती तब तो दोनों ऊपर हुई है आईएमएफ के आगे, और आईएमएफ को बोरे जो करना कर लो। यार मजा आया यार, इंडियन साइड पे इतना क्राउड था, 40,000 बंदा था। मैंने पीछे से जब देखा ना तो बिल्डिंग में बहुत बड़ा वो कितनी खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई थी यार। हमने तो जहरी बात है नहीं देखी, लेकिन उसने जब वो चल के आ रहा था बिल्डिंग दिखाई पीछे से, उसका डिजाइन बहुत मस्त, बहुत जबरदस्त था, बहुत खूबसूरत बना हुआ था। वजह क्राउड तो इंडिया का आता ही आता, पर जो गोरे आगे देखे ना, गोरे गोरे ये एक अलग लेवल ही है। वो भी इंडियन फ्लैग लगा। अबे कितना ज्यादा कर रहे थे भाई, देख रहे थे भाई, खुश हो रहे थे। वो कह रहे थे भाई हमें वो इतना मजा आ रहा है कि हम क्या बताएं, क्योंकि लेवल ही ऐसा हुआ। हाँ ना, वो तो नारे लगते हैं हिंदुस्तान के, ऐसे नारे भाई गाने चल रहे थे, वो एक मस्त माहौल बना होता है। तो पाकिस्तानियों देखोगे तो होगी कि भाई हमारे तो अंग्रेज पहले कोई आता नहीं, अगर भाई साहब कोई गलती से अगर आए तो भाई उसका हाल ही बेड़ा कर देंगे लोग। नहीं छोड़ते वजात। कैसा लगा वजात? मैं तो बोलता हूँ इंडिया की साइड बेस्ट बनी यार। मैंने आपको बताया ना कि इधर से पता लग गया था बाप कौन है बेटा कौन। ये एक पाकिस्तानी बात नहीं करता, ये बात देखो, ये बात पाकिस्तानी नहीं करता, लेकिन वही बात है कि चीजें इनको दिखाने के लिए, समझाने के लिए बात करनी पड़ती है, रियलिटी माननी पड़ती है। तो यहाँ से पता लग जाता है बाप इंडिया बेटे हम ही है, क्योंकि भाई इधर से फर्क पता लग जाता है कि जब इंडिया वाली साइड पे तुम बैठो तो आधा पाकिस्तान तो बाप होता बोलते हैं, उनके पास दुनिया की हर चीज है। बाप तब बोलते हैं, वही ना, बेटे हमें, हमारे पास है कुछ नहीं। सारी बात है, सिर्फ हथियारों के दम पे तो भाई नहीं होता ना, इकोनॉमी वाइज भी आगे बढ़ना होता है। तो यार आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? इतनी बड़ा आदम करते तो